Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about learning. What is learning? What what is the nature of learning? Learning occupies a very important place in our life. Most of what we do or do not do is influenced by what we learn and how we learn it. दैट मीन्स जो ये लर्निंग है हमें सबको पता है कि लर्निंग का मतलब है कुछ सीखना एंड ज़िंदगी में हम टिल डेथ हमें ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है एंड वी लर्न समथिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑल्सो लर्निंग देयरफॉर स्टार्ट्स when we take birth and till the end of the life we go on learning something and something. Learning therefore provides a key to the structure of our personality and behavior. An individual starts learning immediately after his birth and is a strict sense even earlier in the womb of the mother, as all of we know that learning जो है that take place from right from the birth. लेकिन उससे पहले क्या होता है कि जो womb में बच्चा होता है he starts to sense each and everything, he or she starts to sense each and everything in the womb of the mother. Experience direct हो या indirect हो is found to play a dominant role in molding and shaping the behavior. Experience किसी भी तरीके का हो, चाहे वो direct experience हो जो कि आपके साथ गुजरा है, चाहे वो indirect experience हो, that plays an important and dominant role in molding and shaping the behavior of the individual from the very beginning. When he touches a burning matchstick, child get burnt, and the next time when he comes across a burning match he loses no time in withdrawing from it. जब एक बच्चे को तब तक उसको नहीं पता होता है कि ये क्या है, ये मैच स्टिक है, इससे खुदा न खास्ता आग लग सकती है, इंसान जल सकता है, कुछ भी हो सकता है. तब तक जब तक कि वो अगर उसको एक्सपीरियंस ना करे, उस चीज़ देखे ना कि इस चीज़ से क्या होता है, तब तक कि वो उस चीज़ से भागता नहीं है नेक्स्ट टाइम. जब कोई इंसान गलती करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे होते हैं, नेक्स्ट टाइम वो गलती दोहराने की बिल्कुल भी वो उस गलती को नहीं दोहराता है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया होता है कि इस गलती से ये नतीजे निकल सकते हैं, इसलिए वो गलती दोहराता नहीं है. दिस इज़ लर्निंग. जब उसने पहले एक्सपीरियंस से लर्न किया, दूसरे एक्सपीरियंस में उसने वही किया जो सही होता है. एंड नाउ when this happens we say that the child has learned that if one touches a flame one gets burnt. In the same way, from some other experiences he may conclude, for instance, the green apples are sour, barking dogs seldom bite, bird in hand is better than two in the brush. These are all these conclusions derived from experience, direct or indirect, bring about a change in the behavior of the individual. तो जो भी डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस हो, इन चीज़ों से क्या होता है, इंडिविजुअल के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. दीज चेंजेस इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंसेस आर कॉमनली नोन एज लर्निंग. ये जो चेंजेस आती हैं ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस की वजह से, इसी को बोलते हैं हम learning. In this way, the term learning, broadly speaking, stands for all those changes and modifications in the behavior of the individual which he undergoes during lifetime. This is the definition of the learning. However, बहुत सारे thinkers ने and psychologists ने कुछ अपनी definitions दी है. For example, I'll quote some of here. Crow and Crow in 1973 he described learning as learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. It involves new ways of doing things and it operates in an individual's attempts to overcome obstacles or to adjust to new situations. It represents progressive changes in behavior. It enables him to satisfy interests to attain goal. This is the definition of the learning quoted by Crow and Crow in 1973. Another psychologist and the thinker has quoted learning this way, and his name was Woodworth,
and he quoted learning in 1945 as, and any activity can be called learning so far as it develops the individual in any respect, good or bad, and makes him alter behavior and experiences different from what they would otherwise have been. So this definition of learning has been quoted by Wordsworth in 1945. By this we came to know here that कोई भी चीज़ को हम, कोई भी एक्टिविटी को हम लर्निंग बोलते हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल गुड या बैड बिहेवियर जो है उसमें आता है, उसके बिहेवियर में ऑल्टर हो जाता है। एंड सपोज़ हम ऐसे कुछ लर्निंग हम सोसाइटी में सीखते हैं जो विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, एंड हम में वैसा ही बिहेवियर आ जाता है। तो जो ये लर्निंग है ये हम में गुड बिहेवियर भी ला सकता है और बैड बिहेवियर भी ला सकता है। So now here we can by these above definitions we can reveal the following facts, or we can say what are the nature of the learning. It's like नंबर 1, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। लर्निंग जो है वो कोई चीज़ नहीं है जो हमने एक्सपीरियंस किया और हमें उससे हासिल हो गया कोई वो एक प्रोडक्ट के ज़रिए। नो, इट्स अ प्रोसेस, इट इज़ गोइंग ऑन। लर्निंग इज़ कंटिन्यूस, इट इज़ नॉट स्टेबल, इट इज़ कंटिन्यूस, it is not static, it is continuous, it is going on process, क्योंकि मरने के दम तक इंसान को सीखना है। So it is going on process, it involves all those, this is the nature of the learning, it involves all those experiences and training of the individual right from birth, and which helps to produce changes in his behavior. It involves all those experiences and trainings of an individual. ये वो सारे experiences और training जो भी individual अपनी life में experience करता है एक इंसान right from the birth till death, ये इसको help करता है अपने behavior को change करने में। अगर हमें लगता है कि हमारा behavior अच्छा नहीं है, we need to change it, तो वो हमें life के किसी भी moment पे पता चल जाएगा कि हमें ये change करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें birth पे या in the mid of our middle age or in our later age कभी भी हमें लगे तो we can change our behavior. Because of what? Because of learning. Learning leads to changes in behavior, but this does not necessarily mean that these changes always bring about improvement or positive development. One has an equal chance to drift to the negative side of the human personality, and because of these experiences it's not important that we could possess positive attitude. हम negativity की ओर भी जा सकते हैं through learning. So instead of change in existing behavior or acquisition of new behavior, learning may also result in discontinuation or abandonment of existing behavior. Although it is referred to as unlearning, actually unlearning is also a learning process. कोई ऐसी चीज़ है जो हमने learn की हुई है लेकिन that is not good, वो negativity की ओर जा रही है, that is known as unlearning. But actually जो ये unlearning है ये भी एक learning process है। कैसे? क्योंकि हम कुछ अगर ये गलत है कुछ दूसरा सीख रहे हैं, that means वो भी हम सीख रहे हैं out of experiences, ये भी हमने सीखा है, this is known as unlearning. So learning is purposeful and goal oriented. In case there is no purpose, there would definitely be hardly any learning. जहाँ पे purpose ना हो वहाँ पे learning का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हम तभी कोई चीज़ सीखते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, जिससे हमें पता लगता है जो हमें लाइफ में ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम सीखते हैं। जो ज़रूरत नहीं होती है we do not learn those things which we don't want to basically जो लर्निंग है उसमें भी अपना एक विल पावर होना चाहिए, एक वो चाहत होनी चाहिए कि हमें ये सीखना है तो सीखना ही है, then only it can be done, otherwise nothing can be done. Learning is universal and continuous process. ये static नहीं है, learning continuous process है. Learning does not include changes in behavior on amount of maturation, fatigue, illness or drugs, etc. So last but not least mentioned characteristic reveals that changes in one behavior are not always brought and controlled by learning only. So these reasons are explained in the following discussion, that what are learning and what is learning and what is the nature of learning. This I have discussed in this lecture. I hope you understand it. It was all for today. Thank you so much.